welcome back to the channel after weekend. We have dealt about the type of shock, what is shock, type of shock and individual treatment plan. Now we are discussing the management part in detail for every shock. Okay, let's start. Management. First one is resuscitation. This should begin immediately as patient is admitted with hypovolemic shock. It starts with establishment of a clear airway and maintaining adequate ventilation and oxygenation. Okay, resuscitation starts with establishment of a clear airway and maintaining adequate ventilation and oxygenation. This is for any shock, not only hypovolemic shock, any shock. Now, lowering of head with support of jaw to prevent airway obstruction. It improves venous return, preventing stasis of blood in the muscle of leg and preventing edema, increases cerebral circulation. So, lowering of head helps to improve venous return, preventing stasis of blood in muscle of leg and preventing edema, increases cerebral circulation. नीचे से ऊपर तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है व्हेन वी लोअर द हेड. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है वी यूज़ इंट्राट्रेकियल इंट्यूशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन. ओके दिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन इज अ सेपरेट टॉपिक इन BLS. we will discussing that basic life support. I'll be discussing the next topic I'll be starting is BLS only, so that this would be clear for you. Now, traumatic shock or septic shock requires intubation and positive pressure ventilation. What happens in positive pressure ventilation? It increases cardiovascular status, it increases left ventricle output, and it increases the systemic arterial pressure. Positive pressure ventilation increases cardiovascular status, left ventricle output, and systemic arterial pressure. It increases all of these. Okay. Now, in patients who are actively bleeding, major trauma, aortic aneurysm, GIT hemorrhage, it is counterproductive to institute high volume therapy without controlling the site of hemorrhage. Okay, what does this mean? This means that first we should control the bleeding, then we should introduce or institute any fluid therapy. Okay, first bleeding should be controlled in actively bleeding patient like major trauma, aortic aneurysm and GIT hemorrhage. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव कि पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, उसके बाद कुछ भी इंस्टीट्यूट करना है, हाई वॉल्यूम फ्लूइड और एनीथिंग. ओके. ऑपरेटिव हेमोरेज शुड नॉट बी डिलेड एंड रिसक्सिटेशन शुड प्रोसीड इन पैरेलल विद सर्जरी. अगर ऑपरेशन के समय हेमोरेज हुआ है, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो डिलेड नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जैसे सर्जरी चल रहा है उसके साथ ही पैरेलली हेमोरेज कंट्रोल भी होना चाहिए. Immediate control of bleeding. How do we control immediate bleeding? By raising the foot end of the bed and by compression bandage to tamponade external hemorrhage. By raising the foot end of the bed and by compression bandage. Okay. टू टैम्पोनेट एक्सटर्नल हीमोरेज. अगर एक्सटर्नल हीमोरेज हुआ है और हमको इमीडिएट कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, तो जो बेड का फुट एंड है, मतलब ओटी बेड का जो फुट एंड है उसको रेस कर देंगे और कंप्रेशन बैंडेज यूज़ करेंगे. सो इन रिसक्सिटेशन वी मेनली कंट्रोल द एयरवे, द वेंटिलेशन, द ऑक्सीजनेशन एंड द ब्लीडिंग. These 4 things we should be dealing in resuscitation. Okay. Now, fluid therapy that I'll be starting in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.